Assalamu alaikum, my dear students of grade 6. How are you all? I hope you all will be fine. And let's start the work without wasting the time with the powerful name of Allah subhanahu wa ta'ala. As you can see on the board, today we are going to study summary skills. Okay? What are the main elements of a summary? How we can write a summary after reading a lesson? Okay? So summary basically provides us the main idea of the story. Okay? It is a essence of the story. निचोड़ होता है स्टोरी का. हमें मेन एंड बेसिक एलिमेंट्स इन द स्टोरी और स्टोरी के या किसी भी लेसन के समरी में मिल जाती हैं. ओके, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर राइटिंग द समरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, somebody is the character of the lesson or the story. ओके, स्टोरी में या लेसन में कैरेक्टर कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है. देन वांटेड, प्रॉब्लम जो है वो वांटेड क्या है, उसकी मर्जी क्या है उस कैरेक्टर की. ओके, व्हाट ही और शी इज वांट टू परफॉर्म इन द स्टोरी. बट लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. ठीक है, जारी बात है, कोई प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्टोरी बनती है. जब लाइफ ही इतनी ईजी चल रही है, कोई मसला ही नहीं है, तो स्टोरी कैसे बनेगी. ओके, सो डाउन एंड फॉल के साथ ही हमारी लाइफ बढ़ती है. सिमिलरली अ स्टोरी एंड समरी एंड लेसन ऑल्सो हैव द डाउन एंड फॉल्स. ओके, but is the problem in the lesson or the story? Then so, ठीक है, so means कि प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है. प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगा है. या कैसे सॉल्व किया जाएगा? what the character is doing to solve the problem. okay, and at the end then प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें उसको सोल्यूशन मिल गया. okay, what are the basic methods, what are the strategies that a person uses to solve the problem that is being done in the lesson. Okay, these are the elements of a story. Now we will have a brief look on what is somebody, wanted, so, then and but. Okay, book page number is 63. Read the given steps of writing summary of a story. Somebody, who is the main character? Wanted, what did the character want? But what was the problem? मसला क्या था? So, how was the problem solved? मसला कैसे solve हो गया? Then, what was the resolution to the story? At the end, what is the theme? What is the moral lesson of the story? Okay, these are the summary writing steps. Now, what you will do? You will read the story again and fill in the following mind map. Okay, first of all, हमें somebody. Who is the somebody in the lesson? Yes, Akbar. Then, wanted. Akbar क्या चाहता था? But लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? सो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ? एट द एंड व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द स्टोरी. ओके, देन स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन कंप्लीट अ गैप समरी. रीड द फॉलोइंग माइंड मैप टू फिल इन द गैप्स ऑफ अ समरी. ओके, दीज आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू फिल अ गैप समरी एक्सरसाइज. नंबर 1 इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया. जब भी किसी लेसन या स्टोरी का आइडिया लेना होता है, जारी बात है, हम उस टेक्स्ट को केयरफुली रीड करते हैं. ओके, then number 2, find the sentences in the original text and try to identify the gaps. ठीक है, ओरिजिनल सेंटेंसेस जो टेक्स्ट के हैं उनको आइडेंटिफाई करें. देन ओरिजिनल वर्ड्स राइट करने की कोशिश करें. ओके, नंबर 3 इज स्टार्ट विद द इजीएस्ट गैप. सबसे इजीएस्ट गैप से स्टार्ट करें. नंबर 4, फोकस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज नीडेड टू फिल इन द गैप. ठीक है, whenever you are going to write a gap summary exercise, you have given some word bank. ठीक है, आप उस word bank को उस blanks के अंदर fit करना होता है according to the sentence. okay, तो आपको देखना होगा कि कौन सा word वहाँ पे fit हो रहा है. and try out different choices of the given words for each gap. हर जो भी word दिया होता है उसके लिए different choice भी आप जो है वो select कर सकते हैं. now page number is 64. read the story again and complete the gap summary using the word bank. लेजीनेस, अकबर, ऑलवेज, मिस्टेक, हार्ड वर्क. ओके, तो आप इन वर्ड बैंक को यूज करते हुए और लेसन को अगेन केयरफुली रीड करके इस गैप समरी को कंप्लीट करोगे. द स्टोरी इज अबाउट डैश एंड जहांगीर. ओके, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट ब्लैंक अकबर विल कम. अकबर एंड जहांगीर हु यूज्ड टू लिव इन द सेम village. Akbar was a person who always had best crops in his field. This was all due to his dash. On the other hand, Jahangir dash had poor crops due to his dash. ठीक है, he was jealous of Akbar and out of his jealousy he once set fire to Akbar's crops, but at the end
Akbar helped him when his son was sick. Jahangir then realized his dash and apologized for his wrong act. He learned a great lesson that goodness of the heart always wins. Story Elements by Briar Mackenzie. In all fiction books, there are story elements. Story elements help us to understand what we are reading. We're going to learn about 5 different story elements. Let's call these our story elements 5. As in our hand, 5 fingers, 5 elements. Each finger will stand for a different story element. 5 of them. Number 1, the thumb will stand for the characters. There's main characters and supporting characters. There can be more than one. These characters are the people in the story. They can be animals, people, or even things. A man, a turkey, a boy, a girl, or a ghost. Number 2, the index finger will be the setting. The setting is when and where the story takes place. There can be more than one setting in a story, such as outside, inside, the store, the airplane, summer. Number 3, the next finger will represent the events in the story. The beginning, the middle, and the end. Events from the beginning, events from the middle, and events from the end of the story. Our ring finger will be the problem in the story. The problem is when something goes wrong in the story. There can be more than one problem in a story. It can be a big problem or a small problem. And number 5, the pinky finger will be for the solution. The solution is how the problem is fixed or solved in the story. Remember the story element 5, characters, setting, events, beginning, middle, end, problem, and solution. So next time you're reading a book, a fiction book, use your hand to help you recall the features and elements of the story. The story element 5. It will help you better understand what you've read. The end. Okay students, you have studied the elements of a story. Now what you will do, you will write a story of your own using moral story elements you have read in the comprehension focus, and remember to divide it into the paragraphs. Okay, for example, when you see the video, we have the idea of setting, character, a plot, theme, middle, beginning, and end of the story. Okay, these are the elements of the story. So we'll use these elements, you will categorize these elements, you will label these elements, and your purpose will be to give a moral lesson. आपकी स्टोरी का थीम क्या होगा, आपने कोई भी एक मॉरल लेसन देना है, और आपकी ऑडियंस क्या है, चिल्ड्रन. आपने वो स्टोरी चिल्ड्रन के लिए लिखनी है. ओके, यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन स्टोरी स्टूडेंट्स. ओके, फॉर एग्जांपल इस दुनिया में कितने मॉरल लेसन्स हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. ओके, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. ओके, एंड यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रेटेस्ट कर्स. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो आप ज़रूरी नहीं है कि इन ट्रेडिशनल स्टोरीज़ के कैरेक्टर लो, आप खुद से भी कोई कैरेक्टर ले सकते हो. यू कैन मेक योर ओन स्टोरी. ओके, और आपका पर्पस है लेसन देना, मोरल, और आपके जो ऑडियंस है वो यंग चिल्ड्रन है. ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड अल्लाह हाफिज़.